So first of all the best for tomorrow's game to the team. And I would like to ask, then this wicket is a bouncy wicket, and South Africans might as well play 4 seamers. So could India also go with the same strategy of playing all 4 seamers? We already have 4 seamers, I think. So nothing changes for us, at least. I don't think so. हाय राठौर सर यही पूछ रहे थे कि मतलब हॉर्सेस और कोर्सेस वाली पॉलिसी रहेगी कि अगर तेज है पिच तो उसके हिसाब से चहल को मौका देने का कोई चांस है? किस तरह से सोच है टीम की? अभी विकेट देखा नहीं है बॉस, तो अभी देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, एंड देन विल डिसाइड ऑन व्हाट टीम वी लुकिंग टू प्ले. सो Vikram sir, going by matchups, like Akshar's record against South Africa hasn't been great, and they have 3 left-handers in their top 6, Russo, Miller, and Quinton de Kock. So, is the team management taking that into account? I'm sure everything will be taken into account. So we haven't really sat together yet to discuss, because we haven't been to the ground yet. So once we look at the team and the conditions, and then I think all the discussions will take place, and then we'll try and pick the best team that we can. Vikram, KL Rahul has not been among runs in the last couple of matches. So do you think like bringing someone like Rahul-Pant at the top of the order? No, we're not really thinking that. 2 games, I mean, I don't think that's a good enough sample size anyways. He's been batting really well, and he's batted really well in the practice games also. So no, we are not looking at any such thing at the moment. इधर हेलो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के बारे में बात हो रही थी कि जबरदस्त पेस बॉलिंग, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका वाला भी बॉलिंग अटैक जरा ज्यादा ही तेज नजर आ रहा है. तो ये विकेट पे ये बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेलते हुए क्या हम यहाँ 1 हफ्ता रुके थे, इसका अच्छा फर्क होगा? जी बिल्कुल, एडवांटेज मिलेगा उस चीज़ का. थोड़ा पर्थ में पहले आके प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा आइडिया यही था. वी ऑलवेज न्यू कि ये एक इम्पॉर्टेंट गेम रहने वाला है हमारे लिए पर्थ में. सो इसीलिए शायद हम पर्थ में आए थे और यहाँ पे आके प्रैक्टिस किया. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प. And ये जो group of batters that we have now in our team, I don't think pace really bothers us that much. So I'm not really concerned. Yeah. अच्छा दिख रहा है. I think it seems to be a good wicket. I think Melbourne was tough, but this so far whatever we've seen, I think this looks better, more even pace and more even bounced. So let's see how it goes. विक्रम विमल कुमार दिस साइड. टीम बड़ा अच्छा कर रही है, बैट्समैन भी रन कर रहे हैं, तो ऐसे में ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन आपकी टीम में रहता है जो दूसरी टीम में शायद ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में रहेगा, तो वैसे टैलेंट को किस तरह से आप बैलेंस करते हैं? ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11. उस दिन भी देखा कि बीच मैच में चल रहा था, उस दिन भी वो प्रैक्टिस करे. तो एज ए बैटिंग कोच आप किस तरह की बातें करते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, 11 ही लोग खेल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली टीम में. सो आई अंडरस्टैंड ऋषभ इज एन एक्सट्रीमली गुड प्लेयर, और हमने देखा है कि वो क्या कर सकते हैं मैच में किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट. सो बातचीत उनसे यही हो रही है कि तैयार रहें, कभी भी मौका आ सकता है, कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है. तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो हमेशा मेंटली और फिजिकली तैयार रहें, एंड ही इज डूइंग दैट. आपने देखा जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, और अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर रखने की कोशिश कर रहे हैं. सो देखते हैं कब मौका मिल सकता है या कब मौका आएगा उनका, बट आई एम श्योर जब भी मौका आएगा ही विल बी रेडी. Paji, what has gone into the making of Virat's recent form post Asia Cup? Because एक पैटर्न हमने देखा है इन दोनों इनिंग्स में, उन्होंने स्टार्ट पुराने अंदाज में किया बट इज फिनिश्ड ऑफ वेल. हैज दैट बीन अ कॉन्शियस डिसीजन? Not really. I think that really depends on the conditions we are playing on. We always pride ourselves to be a team which will take the conditions and situation in the account, and that's what we've been looking to do. And I think the conditions demanded him, or the situation demanded him to play in a certain way, and he's done that. He's good enough a player to change his game or adapt his game to whatever the team requires, and he's done that brilliantly so far, and we know that he'll carry on doing that. Hi Vikram sir, everybody has been talking about the pace and South Africa's pace attack, but there hasn't been like 2 back-to-back games played here yet, and yet I mean the spinners have been getting a lot of purchase on the wicket. Sikandar Raza, Shadab Khan, then even in the Afghanistan-England match. So is Team India looking at it from a different perspective, that where everybody is talking about pace, we can dominate with spin? As I said, we haven't really looked at the wicket yet, and you're right, we are playing the second game, so that'll give us maybe more insight on how the wicket is playing on the day.
and all the decisions will be taken, keeping everything in account and, thinking about everything. So we are not ruling out anything at this stage. Yeah. Vikram, South Africa and India have already played 7 T20s this year, but all of them were back in India. Does that have any bearing in terms of the familiarity and stuff? You would know the conditions are different here? Yeah, definitely. The conditions are different. So, but again, as a team, as a batting unit, or as the complete team, actually, we pride ourselves to be able to adapt. And that is what good international teams should be able to do anyway. So, looking forward to play in these conditions, and let's see how the game goes. Vikram, since the last T20 World Cup, India's batting had become more forceful in the early stages and trying to go hard at it throughout. But in this World Cup, we have seen a little more conservative starts. Is it like a team decision, or is it just left to the batters who are out in the middle to just decide and how to go about it? That's what I thought I said earlier. Also, we are looking to adapt. We, of course. Playing with intent is always the goal. We're looking to score runs whenever we can. But then we need to keep in account the conditions we are playing on, the surfaces we are playing on. I don't think these are 200 plus wickets. So we'll need to adapt, and I think we've done pretty well in that regard so far. विक्रम सर, वेदर के हिसाब से अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को उतना फेस करने को नहीं मिला जितना बाकी टीम्स के हुए हैं, लेकिन अगर हम आगे चलते हुए देखते हैं ऐसे कि नॉकआउट मैच सेमीफाइनल में वेदर इफेक्ट होता है, तो उस हिसाब से क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैच छोटा होता है तो बैट्समैन का स्ट्रैटेजी क्या होगा, इस हिसाब से क्या प्रिपरेशन में भी आप लोग बात कर रहे हैं? वो प्रिपरेशन चलता ही है बॉस. वो तो मतलब जब टाइम आएगा तो आई एम श्योर वी आर गुड इनफ ए बैटिंग यूनिट और बॉलिंग यूनिट टू अडेप्ट वेरी क्विकली, और वो करेंगे जब भी वो आएगा. उसके लिए कुछ करने को देख रहे हैं. जस्ट प्लेइंग अ क्रिकेट और प्रिपेयरिंग द वे वी कैन द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, एंड जब टाइम आएगा अगर सिचुएशन कुछ डिमांड करेगा तो वी बिलीव वी आर गुड इनफ अ यूनिट टू चेंज एंड अडेप्ट क्विकली. Hope all players are hale and hearty. Sorry? All players are hale and hearty. They are, yes. Yeah. विक्रम सर, पहले बैटिंग करते हुए केएल राहुल का थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहता है, सेकंड बैटिंग करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, और ऐसा लगता है जैसे रोहित शर्मा के साथ ये है कि वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं. क्या आप इसको बता सकते हैं कि दोनों के बीच की जो बैटिंग प्लानिंग है, क्या कम्युनिकेशन है आपकी तरफ से, और दोनों का अपना क्या से है? क्योंकि रोहित ज्यादा एग्रेसिव लगते हैं और राहुल थोड़ा सा मॉडरेट लगते हैं. सो हर प्लेयर का अपना तरीका है खेलने का, एंड दोनों का भी, यू आर राइट, दे हैव देयर ओन वे ऑफ प्लेइंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर इनिंग्स. अच्छी पार्टनरशिप्स भी हुई हैं जहाँ पे दोनों प्लेयर एक दूसरे की फॉर्म उस दिन की देख के एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एंड बोथ ऑफ देम डू दैट रियली वेल. सो आई एम श्योर जिस दिन किसी दिन अगर राहुल का अच्छी फॉर्म में है और उनके बल्ले से बॉल अच्छा लग रहा है तो उस दिन वो भी अग्रेसर का रोल कर सकते हैं बड़े आराम से, और वो करेंगे भी. सो ऐसा कुछ नहीं है कि एक का रोल है अग्रेसर का और दूसरे का नहीं है. वी आर लुकिंग टू स्कोर एज मेनी रन्स एज वी कैन एज अ बैटिंग यूनिट. सो उसमें जिसको जैसे भी खेलना पड़ेगा, we'll try and do that. Do you realize that not just Pakistani fans, not just Indian fans, Pakistani fans would be praying for India tomorrow as well, because we want India to win. कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी, obviously, because we are on the equations now. But नॉर्क्यू ने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने इंडिया को एक चैलेंज दिया. How would you take that challenge? I haven't seen the press conference, so I won't know what challenge he has thrown. But he said we'll win against India, and we are very strong. That's good. Everybody should believe that. Why not?